German class, welcome back to the new vocab session. Vocabulary, there is a separate playlist for the vocabulary word charts. If you want to improve vocabulary, you don't know how to memorize the words, what kind of words I can use in my writing and speaking paper. किस तरह से आपको अपनी स्पीकिंग इंप्रूव करनी है. राइटिंग में, स्पीकिंग के एग्जाम में वोकेबलरी का बहुत बड़ा रोल होता है. यू शुड नो हाउ टू यूज द वर्ड्स करेक्टली. इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सेपरेट. इस तरह की वीडियोस और भी बहुत सारी मिल जाएंगी. डेली एक वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और डेफिनेटली काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी. शुरू करते हैं आज के सेशन को. फिल इन द कॉन्टेक्स्ट. मिसिंग कॉन्टेक्स्ट. द कॉन्टेक्स्ट इज मिसिंग. द वर्ब इज फेलन. ये वर्ब आपने पढ़ी होगी. फेलन मतलब मिस, कोई चीज़ मिस होना. जैसे कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है, आप किसी से बात कर रहे हो, ओके, एरिस्प्रिस्ट यू वर फिल इन द कॉन्टेक्स्ट. हमेशा मिसिंग कॉन्टेक्स्ट की बात करता है. स्पेस्टेड इन कॉन्टेक्स्ट निस्ट देयर कॉन्टेक्स्ट इज फिल एंड. फिल एंड इसको हम बोलते हैं फिल एंड. फिल एंड ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कैसे बना है? वर्ब से बना है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्टिसिप आइंस आल्स एडजेक्टिव. फिल एंड देयर कॉन्टेक्स्ट इज फिल एंड, द कॉन्टेक्स्ट इज मिसिंग, राइट. The Laufenden Menschen, there is im Park. The running people, the Laufenden. ये क्या इंफिनिटिव से बनते हैं? Laufend, राइट. Laufend, Weinend, सब डी लगता है. पार्टिसिपाइंस, Weinend, Laufend, Fehlend, these are all participients als adjective. ठीक है. तो fill in the context, the missing context. Erspricht über den fehlenden Kontext. Das Verstehe ist gar nicht. मेरे को समझ नहीं आया उसने क्या बात करी, क्योंकि वो एक मिसिंग कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात कर रहा था. Erspricht über fehlenden Kontext. नेक्स्ट इज Klassenarbeit ankündigen. ओके, बच्चे स्कूल जाते हैं, क्लास वर्क करते हैं, घर पे आते हैं, होमवर्क करते हैं. Klassenarbeit घर पे होमवर्क करते हैं, हाउस ऑफ गाब. सो Klassenarbeit ankündigen, इसमें पैसिव लगा सकते हैं. Klassenarbeit वेड angekündigt, अनाउंस किया गया, डिक्लेयर किया गया. अनाउंस करना, किसी भी चीज को अनाउंस करना, ठीक है, डिक्लेयर करना, पब्लिक में बताना, दैट इज कॉल्ड ankündigen. Ich habe euch Klassenarbeit angekündigt. Ich habe euch die Aufgabe angekündigt. Okay, angekündigt, परफेक्ट क्या बनेगा? angekündigt. I have informed. I have told you. Announced. Ich habe die Klassenarbeit und die Hausaufgabe im Unterricht angekündigt. आई हैव इन्फॉर्म, मैंने क्लास में इन्फॉर्म कर दिया है क्लास वर्क और होमवर्क. सो ankündigen सेपरेबल वर्ब, परफेक्ट, hat angekündigt. ठीक है, hat angekündigt. Zulässig means allowed, something is permissible. Das ist nicht zulässig, it is not permissible. Permissible, ठीक है, something which is not permissible, you cannot get permission for that. Okay, hier darf man nicht spielen. Das ist nicht zulässig. Das ist nicht zulässig. It is not permissible. Nicht zulässig means not permissible. Or etwas ist zulässig. It is permissible. It is allowed. Hier dürfen die Kinder spielen. Das ist hier zulässig. Hier darf man ein Auto parken. Das ist zulässig. It is permissible. If something is permissible or non-permissible, right? Zulässig und nicht zulässig. Stress erzeugen means to generate stress, to generate cause. स्ट्रेस के बहुत सारे रीजन होते हैं, कारण होते हैं. ओके, स्ट्रेस erzeugen. इसमें keine Arbeit machen, die Stress erzeugt. मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे स्ट्रेस जनरेट हो. इसमें keine Arbeit machen, die Stress erzeugt. ठीक है, जो स्ट्रेस को कॉज करे, स्ट्रेस को पैदा करे. Stress erzeugen. Wir möchten darauf achten, dass diese Arbeit nicht Stress erzeugt. Ich möchte solche Arbeit vermeiden. मैं इस तरह के वर्क अवॉइड करता हूँ. vermeiden. Ich möchte solche Arbeit vermeiden. अवॉइड करता हूँ मैं जिनसे स्ट्रेस पैदा होता है. Stress erzeugen. समझिए, बहुत अच्छा वर्ब है. स्ट्रेस के साथ लिखोगे Stress erzeugen. ओके. Neue Wörter hinzufügen. ये सेपरेबल नहीं है, दिस इज नॉट सेपरेबल वर्ब. Neue Wörter hinzufügen मीन्स neue Wörter, ठीक है, ऐड करना. न्यू वॉटर ऐड करना. इसमें neue Wörter hinzufügen. इसमें etwas hinzufügen. आप कोई बात बोल रहे हो, किसी डिस्कस कर रहे हो, गेस्प्रेश कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलना चाहते हो, तो आप बीच में इंटरप्ट करके बोल सकते हो Entschuldigung, इसमें auch etwas hinzufügen. आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड ऑन समथिंग. मैं भी कुछ इसमें बोलना चाहता हूँ, कुछ एड ऑन करना चाहता हूँ.
Ich möchte auch etwas hinzufügen. और यहाँ पे neue Wörter hinzufügen. टीचर ने वोकैब की लिस्ट बताई 10 वर्ड्स, आपने बोला ich möchte auch einige Wörter hinzufügen. मैं भी कुछ वर्ड्स इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ, कुछ इसमें शामिल करना चाहता हूँ. hinzufügen. The Bildschirm, कंप्यूटर पे काम करते हैं हम, लैपटॉप पे काम करते हैं, स्क्रीन होती है. Bildschirm ist arbeite stundenlang vor dem Bildschirm. हाँ, स्क्रीन के आगे stundenlang काम करना, घंटों भर काम करना, stundenlang. या die Kinder, die Kollegen, die Mitarbeiter arbeiten stundenlang vor dem Bildschirm. vor dem, स्क्रीन के आगे, vor dem Bildschirm, स्क्रीन के सामने बैठकर काम करते हैं. Das ist eine größere Herausforderung. It's a big challenge. Das ist eine größere Herausforderung. It's a big challenge. Das ist eine größere Herausforderung for mir. मेरे सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है. Das ist eine größere Herausforderung for mir. मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है. ओके, और ich stehe vor einer größeren Herausforderung. I'm standing in front of a big challenge. Ich arbeite stundenlang for dem Bildschirm am Computer und das ist schädlich. और ये बहुत डेंजरस है, बहुत ही हार्मफुल है. schädlich है ये. क्या होता है? स्क्रीन के आगे अगर घंटों भर काम करोगे तो बहुत हार्मफुल होगा. das ist schädlich für den Körper. पूरी बॉडी के लिए, ना केवल आइस के लिए, पूरी बॉडी के लिए हार्मफुल है. das ist schädlich für den ganzen Körper. पूरी बॉडी के लिए बहुत schädlich है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इंजूरियस है, जो आपकी हेल्थ को ख़राब करे. दैट इज schädlich, हेल्थ को ख़राब करे. das ist schädlich für den Körper, für die Augen, für den Rücken. राइट, इस तरह से सेंटेंसेस आप भी फ्रेम करोगे, कमेंट में फ्रेम करो, लिखो. sich beschweren massiv über, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करना. massiv, ich habe massiv Beschwerde bekommen. Ich habe viele Beschwerde bekommen. और hat sich massiv darüber beschwert. उसने इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करी, बहुत बड़ा चढ़ा के उसने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आई है इस टॉपिक के ऊपर, या इस प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है. Der Chef hat sich massiv darüber beschwert. इसका परफेक्ट बनाएंगे beschwert. कंप्लेंट की है, ठीक है, किसने की है? शेफ ने, बॉस ने की है. या फिर कुंडन, हाँ, डी कुंडिन, कस्टमर ने की है, फीमेल कस्टमर. तो डी कुंडिन hat sich darüber massiv beschwert. Der Chef hat sich darüber massiv beschwert. Ich habe mich über das Projekt, किस चीज़ पे? über das neue Projekt, about the new project, massiv beschwert. बहुत massively, immensely, बहुत ज़्यादा immensely, ठीक है, immensely इस पर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट हुई है, किसी ने करी है कंप्लेंट. ठीक है, प्रोजेक्ट सही नहीं चल रहा है, प्रोसेस ठीक नहीं चल रहा है. देयर Ablauf ist sehr langsam, das Projekt ist sehr langsam. ओके, सो viele Menschen haben sich darüber beschwert. कई लोगों ने उसके ऊपर कंप्लेंट करी है मैसिवली. ठीक है, in besserer Stimmung, in better mood. I am in better mood. Ich bin heute in besserer Stimmung, weil ich einen neuen Job bekommen habe. Mein Freund ist heute in der besseren Stimmung, weil er eine Arbeit gefunden hat. मेरा दोस्त आज अच्छे मूड में, मैं आज अच्छे मूड में हूँ क्योंकि मुझे नया काम मिला है, मुझे नई जॉब मिली है. सो इन देयर या इन बेसर स्टीमिंग जाइन, टू बी इन अ गुड मूड, टू बी इन अ बेटर मूड. कल जो मूड था उससे बेटर आज. गुड और क्या होगा? कंपैरेटिव बेसर. ठीक है, तो इसलिए इन बेसर स्टीमिंग मूड में, टेम्परामेंट में. एक और बोलते हैं ich bin gut gelaunt. ये भी सेंटेंस बोलते हैं ich bin heute gut gelaunt. आई एम इन गुड मूड. और ich habe gute Laune, अगर नाउन लिखना है ich habe gute Laune, I have good mood. Gute Laune haben, ich bin gut gelaunt sein, er ist heute gut gelaunt, sie ist heute nicht gut gelaunt, schlecht gelaunt. She is in bad mood, she is in good mood. You can say so many sentences. Okay, gut gelaunt, schlecht gelaunt, gute Laune haben, schlechte Laune haben, gute, schlechte, bad mood. तो ये सारे वर्ड्स इस तरह से आप यूज करोगे. The consume von Tee und Kaffee, the consumption of tea and coffee is not good. The consume von Tee und Kaffee ist nicht gut. Das halte ich für unwichtig oder ungesund. I consider it as unhealthy. Ich halte ihn für ungesund. I consider, कोई भी चीज़ आप कंसिडर करते हो, halten.
आई इस हाल्ट इन क्या है यहाँ पे, कंज्यूम के लिए मैंने इन बोला है, डेट कंज्यूम कंजम्पशन, det Konsum von Tee ist ungesund. Schlecht. Das halte ich, ja, den halte ich für ungesund. Viele Menschen haben Körperproblem, okay, körperliche Problem, körperliche Beschwerde, okay, wegen des Konsums. Many people have complaints, bodily complaint, ठीक है, körperliche Beschwerde, उनको शारीरिक प्रॉब्लम, किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम हो रही है, körperliche Beschwerde क्यों हो रही है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है कॉफ़ी की, कैफीन होता है ना. Viele Menschen haben körperliche Beschwerde, weil sie viel Tee trinken, weil sie viel Kaffee trinken, weil sie viel Kaffee konsumieren. इसका वर्ब क्या बनेगा, कंज्यूम का konsumieren, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं. और लास्ट, Hilfe bei Bekämpfung der Brände. ब्रेंड होता है बर्न, आग लग जाना, जंगलों में आग लग जाती है, फॉरेस्ट में आग लग जाती है, तो हेल्प फॉर फाइटिंग द ब्रेंडर, हेल्प ich möchte dir helfen, ich möchte dir bei Bekämpfung der Brände helfen, bei Bekämpfung, fight against, to fight for something, bekämpfen, वर्क क्या है, bekämpfen, किसी चीज़ के लिए फाइट करना, ठीक है, bekämpfen, ठीक है, bekämpfen for, fight for justice. ये थी आज के वोकैब सेशन. आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. थैंक यू सो मच. लाइक एंड सब्सक्राइब. Auf Wiedersehen, bis bald.